नमस्कार। दिलावर अली आज़र का एक शेर है कि उससे कुछ खास ताल्लुक भी नहीं है अपना, मैं परेशान हुआ जिसके परेशानी से। दर्शकों, बरसों पहले मैंने एक फ़िल्म देखी थी तेरी मेहरबानियाँ, और उसमें एक डॉग को ले कुत्ते को लेकर एक आदमी के बीच के विश्वास को, प्यार को इस तरह से दर्शाया जाता है कि वो देखने वालों की आँखों को नम कर देता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है वाली तर्ज पे आज हम लोग इस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने वाले हैं। हम जानने वाले हैं कि आखिर पशुओं के बीच में और मनुष्य के बीच में जो ये प्रेम है, ये किस तरह से होता है, और साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो पशु हैं वो अपनी बातों को कैसे जाहिर कर पाते हैं, क्योंकि वो तो ऐसी भाषाएं बोलते हैं जो कि हम में से हर एक कोई उनको समझ नहीं पाता है। लेकिन आज मैं जिस शख्सियत को लेकर आज आपके सामने हाजिर हूँ, एक ऐसी शख्सियत हैं जो ना केवल इनकी भाषा, एनिमल्स की जो भाषा है उनको बखूबी समझने की कोशिश करती हैं, बल्कि उनको दर्द को बांटने की भी कोशिश करती हैं। तो बहुत सारे जो सवाल जो आपको मन में रहते हैं, अगर आप किसी पेट को पालते हैं और आपको भी समस्याएं आती हैं कि हम इनकी ग्रीफ को समझ नहीं पा रहे हैं, हम इनके रिएक्शन समझ नहीं पा रहे हैं, तो आज का शो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ऐसी शख्सियत हमारे साथ में जुड़ी हैं जो हमें बताएंगी कि किस तरह से सारी चीज़ें रिएक्ट करती हैं और कैसे आप उनके दुख दर्द को समझ के उनके अंदर साझेदार की भूमिका निभा सकते हैं। क्योंकि ये अक्सर देखने में आता है कि इंसान से कहीं ज़्यादा कई बार एक पशु है, जो चाहे कुत्ता कहें या कोई और कहें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा वफादार साबित होता है। तो उस वफादारी की कीमत हमें भी चुकानी चाहिए और हमें भी उनके दुख दर्द में काम आना चाहिए। तो चलिए स्वागत करते हैं आज की हमारे अतिथि से जो हमारा मार्गदर्शन करेंगे। नमस्कार इंद्रानी दास जी, मैं सुनील नारनौलिया क्रेडेंट टीवी के आज के इस मंच के ऊपर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, वैसे इंद्रानी दास जी इस मंच के लिए कोई नया नाम नहीं है, इनके जरिए हम बहुत सी बार पहले भी मिल चुके हैं और हमें जानने की कोशिश कर चुके हैं कि किस तरह से जो हम बात करते हैं, पशु पक्षियों की बात करते हैं, उनके जीवन के अंदर क्या रहता है, वो सोचते किस तरह से, वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, इसके ऊपर हमने कई बार चर्चा की है। आज हम इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो आखिर से दुख की बात करें, दर्द की बात करें, खुशी की बात करें, तो किस तरह से उसे जाहिर करते हैं। तो आगे बढ़ूँ उससे पहले इंद्रानी दास जी के बारे में बताना चाहूँगा। इंद्रानी दास जी वे ऑफ आर्टमिक एनिमल रेकी शमनिक और एनर्जी हीलिंग वेब संस्थान की फाउंडर हैं, और इंद्रानी दास जी एक नोटेबल एनिमल कम्युनिकेटर हैं, साथ में एनिमल रेकी टीचर हैं और एनर्जी हीलर हैं। ये देश की उन लीडिंग पर्सनैलिटीज़ में हैं जो कि देश नहीं बल्कि विदेशों में भी एनिमल्स को लेकर बहुत अद्भुत कार्य कर रही हैं। ये करीब पिछले 12 साल से एनिमल रेकी को लेकर, एनर्जी हीलिंग को लेकर काम कर रही हैं। आप एनर्जी हीलिंग की बात करते हैं, रेकी की बात करते हैं, उनके ऊपर हम लोग ह्यूमंस के ऊपर तो देखते हैं, लेकिन एनिमल पे काम करने वाले बहुत कम आपको नजर आएंगे। और उनके अंदर इंद्रानी दास जी मेरे ख्याल से देश की इकलौती इस तरह की शख्सियत है जो उस पर काम कर रही हैं। ये सर्टिफाइड टीचर हैं इन द लेट एनिमल्स एंड द लीड मेथड ऑफ एनिमल रेकी को लेकर, और प्रैक्टिशनर एंड द टीचर एट द शेल्टर एनिमल रेकी एसोसिएशन सारा से हैं, और प्रैक्टिशनर पेरुवियन शैमनिज्म को लेकर। तो बहुत बहुत धन्यवाद है इंद्रानी जी कि आपने इस मंच के लिए हमें समय दिया। मैं भी काफ़ी दिनों से इस पर विचार विमर्श भी कर रहा था, चर्चा भी करना चाह रहा था, और आखिर आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और पहला सवाल जो मैं आपसे लेना चाहूँगा वो मैं यही लेना चाहूँगा, हाउ डज द बॉन्ड बिटवीन द ह्यूमंस एंड देयर एनिमल कंपेनियन कंट्रीब्यूट टू द डेप्थ ऑफ द ग्रीफ एक्सपीरियंस व्हेन एन एनिमल कंपेनियन पासेस अवे। तो जब एक आदमी के साथ में ऐसा कुछ घटना घटती है तो वो इसे जाहिर कर देता है, लेकिन एनिमल्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं उसके ऊपर भी थोड़ा सा प्रकाश करें प्लीज। इंद्रानी जी, So I'm इंद्रानी जी going मेरी to आवाज talk again. जी। So I think the question here is, do animals also grieve, and how do we know that they are grieving? And the fundamental, I mean, the question comes because we think that animals are something, our cats and dogs, they are different. Maybe they don't grieve. But when we get to the point where we can say that, the cats and dogs, we have a lot of similarities as well. And they have also emotions just as we have. Um, Anyone who lives with cats and dogs would have seen there are some cats and dogs who will experience fear. They will show signs of fear. Some don't like fireworks, so there is fear.
some have anxiety, some feel anxious when the human leaves the house. So there is anxiety as well. So just as there is fear, there is anxiety. Grief is another emotion. And just as humans experience grief, our animal companions also experience grief. Grief can happen from loss. It can happen also from change. If for example, if I have had this experience, so I know that I've had multiple cats, and when one of them transitions, passes away, then the other cat knows that there is something going on, and the second cat is missing the first cat. So that sense of loss is there. That sense of loss does lead to grief. And if you're asking for signs, how do I know that my cat or dog is grieving? The most important thing to watch out for is change. There will be a change in their normal routine. Maybe a cat who never cries will start crying, or maybe a cat who is always chattering, talking will suddenly become very quiet and silent. So you know that there is something going on. And most humans already know this. So people don't come to me and ask, "Is my cat grieving?" They already know this because they see the change, and we know our cats and dogs very well. So when something is off, we notice it. So that's the first thing to notice. Is there a change? Is there a change in the normal behavior pattern? And that is something to watch out for. So that's like the first sign. So then you know that something is going on, and then you can investigate further. Is it something physical? Maybe it's something emotional. And you can find out. But yes, grieving does happen. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इंद्राणी जी। बहुत महत्वपूर्ण सी बात हमारे सामने ये निकल कर आती है कि कहीं ना कहीं जो रूटीन की जो हम बात कर रहे हैं, इंद्राणी जी जैसे कहीं कि उसके अंदर परिवर्तन आ जाता है, चाहे वो अपने आप को उस चीज़ में कनेक्ट नहीं कर पा रहे होते हैं जिस तरह से कि पहले वो कर पा रहे होते हैं। हम सिर्फ ये मान के चल सकते हैं जैसे इंसान ऐसी घटनाओं के बाद में अपने आप को आइसोलेट करने की कोशिश करता है, कहीं ना कहीं वो भी अपने उस ग्रीफ को जाहिर करने की कोशिश करते हैं। बस हम उन्हें समझ नहीं पा रहे होते, तभी थोड़ी समस्याएं आ रही होती हैं। तो उसको हम थोड़ा सा अगर देखें, गौर से अगर ऑब्जर्व करें, तो आप देखिएगा कि वो जो डेली रूटीन था उसके अंदर उसका एक बड़ा सा बदलाव आ गया, जैसे कि इंद्राणी जी ने अभी बताया। तो उस बदलाव को आपको नोटिस करना हो, चाहे हो सकता है खाने पीने में हो सकता है उसे जागने सोने के अंदर हो सकता है क्राई कर रहा हो या कुछ और कर रहा हो। लेकिन ये जो सारी बातें हैं जो उसकी अनियत को जो करवाती है, शो करती हैं, उनके जरिए हम लोग ये समझने की कोशिश कर सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्रीफ का द्वारा के दौर के अंदर आए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है इंद्राणी जी। और अगले सवाल के तौर पर मैं ये लेना चाहूँगा कि हाउ डज द एनर्जी हीलिंग अप्रोच द इमोशनल एंड द एनर्जेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ द ग्रीविंग द लॉस ऑफ एनिमल कंपेनियन। क्योंकि जब इंसान की हम बात कर रहे होते हैं तो उस केस के अंदर तो बहुत सारी बातें होती है, समझ में जाता है, हम समझा भी देते हैं, बट इन केस ऑफ एनिमल हाउ कैन इट इज? I think the short answer is it's the same as humans. So just as with humans, when we do work with energies, then it addresses everything, physical and emotional. Same with animals. So just as we have our physical body, we have our emotions, and we have our energy body. So we have this vibration. So it's the same with the animals. And if you have to talk about emotions, so any disturbance in either the physical layer or the emotional layer causes a disturbance in the vibrational field as well. Which is why in energy healing we say that energy healing will address the root cause. इंद्राणी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? इंद्राणी जी, इंद्राणी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? दर्शकों, शायद इंद्राणी जी की किसी तकनीकी समस्या की वजह से यहाँ पे इंद्राणी जी ने एक जो बड़ी महत्वपूर्ण सी बात कही है कि एनिमल रेकी की जब बात कर रही हैं, तो उस केस के अंदर जैसे एनिमल्स के साथ में जो किया जाता है उसी तरह से उनके साथ में होता है और वो भी उसी तरह से रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करते हैं। तो ये जानना है, तो जैसे कि अभी इंद्राणी जी हमारे साथ दोबारा कनेक्ट होगी तो उनसे हम जुड़ेंगे, लेकिन तब तक हमें बात इस पे ज़रूर विचार हमें करना चाहिए कि ऐसी स्थिति जब भी आ रही होती हैं, एनिमल्स की जब हम बात कर रहे होते तो एनिमल्स को लेके अभी इंद्राणी जी ने बड़ी महत्वपूर्ण सी बात कही थी कि वो जो चीज़ें जाहिर कर रहे होते हैं उसके लिए वो भाषा उनकी अपनी होती है।
वो भाषा जो हमसे अलग होती है, हम कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि हो सकता है कि आप एक नॉर्थ इंडिया में रहने वाले हैं और साउथ इंडिया जाते हैं तो आपको उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही होती है, उनके एक्सप्रेशंस में भी आप नहीं मैच कर पा रहे होते हैं, लेकिन उनका भी एक तरीका है, अपनी बातों को जैसे जाहिर कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें भाषा से परे हटकर इस बात पे जोर देना पड़ेगा कि उनकी फीलिंग्स कहीं, एक्सप्रेशंस कहीं, वो क्या हैं। तो जो फीलिंग्स होती हैं, जो एक्सप्रेशंस होते हैं, वो कहीं ज़्यादा मायने रखते हैं, उनको करना पड़ेगा। और वो चाहे दुख की बात करें, चाहे सुख की बात करें, सबको जाहिर करने का और एक्सप्रेस करने का एक सा ही तरीका होता है। अगर आप दुख में हैं तो चाहे आप हों, चाहे कहीं भी हो, किसी भी देश का आदमी अपने आप को डल महसूस करता है, लूज महसूस करता है, लो लेवल में महसूस करता है, उसी तरह एनिमल्स को लेकर भी है। इसी तरह से अगर आप किसी एंजाइटी में, तनाव में, परेशानी में या फिर कोई अनईज फील कर रहे हैं, कोई परेशानी महसूस कर रहे हैं, तो अग्रेसिव हो सकता है, डिप्रेस्ड हो सकता है, तो उसी तरह की बातें कहीं ना कहीं एनिमल्स के अंदर भी होती हैं, तो वो उसको देखा जा सकता है। हम इंद्राणी जी का इंतजार कर रहे हैं, बस जल्दी हमारे साथ में जुड़ती हैं, तब हम उनसे और चर्चा करेंगे आखिर एनिमल्स के साथ में किस तरह से होता है। दर्शकों, अगर आपके इस वक्त कोई अनुभव हो जो आप हमारे साथ साझा करना चाह रहे हों तो हम साझा करें, क्योंकि जब तक इंद्राणी जी हमारे साथ दोबारा जुड़ती हैं तब तक हम इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। इंद्राणी जी ने एक बात और भी जो महत्वपूर्ण सी बात वो ये भी कही थी कि एनिमल रेकी को जब हम बात कर रहे थे, तो जिस तरह से रेकी है वो ह्यूमंस पे काम कर रही होती है, वो इसी तरह से एनिमल्स के ऊपर भी काम कर रही होती है। वो उनकी एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर जो रेकी की जो बात कर रही थी वो एनर्जी के ऊपर बात कर रही होती है, एनर्जी सभी की एक जैसी ही होती है। इंद्राणी जी हमारे साथ फिर से कनेक्ट हो रही हैं, हम दोबारा उनसे करते हैं कनेक्ट। इंद्राणी जी, पुनः स्वागत है आपका। मेरे ख्याल से नेटवर्क की वजह से डिस्कनेक्ट हो गए थे आप। I'm very sorry about that. जी जी, कोई जी। इंद्राणी जी, पुनः मैं अपने सवाल पर आता हूँ कि जो एनिमल रेकी है वो किस तरह से काम करती है। ह्यूमन रेकी की हम बात करते हैं, वो समझ में आती है, एनिमल रेकी किस तरह से काम करती है? Okay, so I will just summarize because I don't know where I got disconnected. So I was saying that we have a physical body, and then we have our emotions and our mental thoughts, and then we have this vibrational field. And whether it's physical layer, whether it's an emotional layer, or maybe mental thoughts, they all have an effect on that vibrational field as well. So we're talking about grief, and if I have a cat who is grieving, then that grief change in the vibrational field. There is a sense of disturbance, a lack of balance, a lack of harmony, which is why anyone who is in NA that we will address the root cause, even if we don't know what is going on, because all we are doing is we're bringing the energies into a state of balance. And with things like grief, what happens is that the grief is not something. What happens after an energy healing session is that you become a little more comfortable in facing the grief. And to be honest, if my cat, I've lost so many cats over the years, that grief is such a very, it's a very precious time, because that is the time we remember all the times that we have spent together. And I don't know if people really want that grief, or even animals want the grieving process to be, cut short. The support that is needed is, yes, I know that you're missing someone and someone is not there, and there is this process of grief, which is a very natural emotion. It's more about supporting you through that process of grief so that it becomes a different experience. It becomes something that is more memorable, more cherishable. It's not that the grief is pulled out of the system and suddenly you are laughing. That rarely, that's not really a very healthy idea either. चलिए इंद्राणी जी, एक सवाल हमारे साथ में, हाँ Sorry. जी बोलिए, आप कुछ कह रहे थे आप, प्लीज कंटिन्यू। So I was working with this one person. She had 2 dogs, and one of them, the dog was senior in age, and eventually the dog transitioned. So the other dog, who was a much younger dog, she kind of lost interest in life. She wasn't really interested in eating or drinking anymore. She had this habit of she did this like a bark, a very different cheery kind of a bark in the morning. She stopped barking. So the person was worried that she herself was grieving because she's lost her dog, and then the other dog is also not acting normally. So what to do? And what we did was, so I did a round of
EFT tapping on her for her grief, and then also a round of EFT tapping for her dog, for the dog's grief. And the session went well. Up to the end of the tapping, the dog just relaxed, went off to sleep. And next day, I got this message that she started barking again. That morning bark, like a good morning bark that she used to do. She started barking again. It's like there's this interest in life which has come back. It's not that the dog has stopped grieving. The grief is still there, but you're able to deal with it better. So that's where energy healing helps. अच्छा, इंद्राणी जी, एक सवाल हमारे साथ में आए माध्यम जी हैं, वो पूछना चाह रहे हैं कि does the environment of our house, like how we speak and the behavior, affect the behavior of our pets? क्योंकि ह्यूमंस के ऊपर तो होता है ये कि हम जिस तरह व्यवहार करते हैं उसका उसके ऊपर फर्क पड़ता है, बिहेवियर हमारी जो बोलते हैं स्पीकिंग उसका फर्क पड़ता है. तो does the environment of our house, like how we speak and the behavior, affect the behavior of our pets? So, there are two extreme views on this, and this is something we have to be a little careful about. When we live with cats and dogs, there is this sense of a shared energy field. There is a book on it, that dogs can sense when their owners are coming back home, and there is this theory of morphic resonance. So if I am stressed, my cat will get that sense that I'm stressed because my cat is tuning to me. So there is that sense of shared energy, and that the stress is there, and he can feel it. And if he feels the stress of obviously stress is not something that someone would like, then my cat would also get affected by that stress. There is another extreme view that my cat is there to take off my stress. Now that does not happen. So the cat is living the cat's life, but not really there to take away your stress. So you have to do your stuff to take away your stress. And when your stress goes, when you're able to kind of take care of yourself, self-care routines and all, then you will see a change in your animal's behavior as well. Because when I am calm, my cat will also be calm. And that happens because of this shared energy field that we have. चलिए, इंद्राणी जी, एक अगला सवाल जो मेरे ध्यान के अंदर है, हाउ डज द प्रोसेस ऑफ ग्रीविंग इन द एनिमल कंपेनियन चेंज ओवर टाइम, एंड व्हाट स्ट्रेटजी कैन इंडिविजुअल्स यूज टू कंटिन्यू honoring their animal companion's memory while they're gradually healing from the loss? So, the process of grieving, there is a change, the intensity changes. So, anyone would have experienced, anyone who has experienced any kind of loss, whether it's a loss of an animal companion or anything else, would have seen that in the beginning, there is this sense of intensity. And over a period of time, you feel that the intensity is, you are able to add more things into your life. And so in the beginning, let's say grief is taking up 90% of your time. Eventually, you reach a point where grief is taking up 50%. Then the entire process of grieving becomes kind of integrated with the rest of your life. So it's not that I'm not grieving over the loss of all my cats that have transitioned. I still miss them. I still remember them. But that's a part of the daily life right now. So once in a while I will remember, okay, if this cat was here, I would have done this, or she would have done that. But it's not stopping me from carrying on with my normal routine. When that happens, that is when it's time to really reach out to a professional grief counselor, for example, and really get the help that is needed when you're not able to move on. I hope that answers the question. मैं कुछ ऐसी अगर आप चाहें तो मैं आपसे कुछ, कैन यू शेयर द पर्सनल स्टोरी दैट हाईलाइट द यूनिक एंड द मीनिंगफुल कनेक्शन पीपल फ्रॉम विद देयर एनिमल कंपेनियंस एंड हाउ डज द कनेक्शन इन्फ्लुएंस द ग्रीविंग प्रोसेस? वुड लाइक टू शेयर समथिंग? I'm sorry, I did not get the question. I'm sorry. I just want to say, can you share some personal stories that highlight the unique and the meaningful connections people from with their animal companions and how these connections influence the grieving process? Some stories which you feel in your life. Okay. So I don't know if you can see, there are these photos at my back. These are like all the cats who have gone. The loss, the sense of loss is a big thing. And the grief is going to be there. There is nothing you can do to stop the grief. And that is actually a difference that we have compared to cats and dogs.
when we grieve, we are also fighting the grief. So on one hand, I'm grieving, I'm feeling sad, and on second, there is this, I don't want to feel sad. I have to get over this sadness. So there is this huge conflict going on. And that conflict just adds to the stress and adds to the grief as well, because you're fighting grief. Animals don't fight grief. When they're grieving, they grieve. They go through the entire process of grieving and then they come out of it, because they understand that it's temporary. And that is another thing that we enable with all these healing techniques. EFT, for example, is something that I use very often for grief. So we allow the process to really reach a conclusion. We don't really say that, as I said, you don't want to come out of grief like that. You have to reach that state of completion. With my own cats, yes, of course, grief has been there. What has really brought me comfort, and what I also suggest to people, is a few very simple things. I mean, okay, energy healing is of course there, and you can reach out to an energy healing practitioner. But there are some very few, really, really simple things that anyone can do. And I call this, the non-invasive, compassionate ways of connecting with your animal companions. Two things. One, so I don't have that here, but I create an altar kind of. It's like a sacred place. I put up photographs, I put all their favorite stuff, the toys and all. So it becomes like a very sacred place. And I light a candle. It's kind of a place where I can go and just share that moment together again. So a lot of my clients, I tell them to do that, and it really kind of helps them. The energy shifts from being something which is pulling you down to something which is more sacred now. So you see, the shift has happened. It is still grief, but it's a different flavor of grief. The second thing, which is also very easy to do, is just write letters. Just write. You don't have to send them. But take a pen and paper, preferably on ink, like pen and paper, not digital. It's just write to them. Let the emotions come out. That's a very beautiful way of, one, you process your own emotions, and second, you also feel that connection. So I write to them, every anniversary, every time I remember, okay, this is their birth anniversary or this is the transition anniversary, I open that notebook and I write to them. And it helps. It sounds simple, it sounds silly, but it helps. And another thing a lot of people I have been guiding people to do is to do the ceremony. So, like for humans, we do this, right? We do this, we have this, depending upon whatever tradition we follow, after a certain day, we do a ceremony, as some kind of a puja or something. And we say, okay, this is it, it's a completion stage. Now, maybe for us, some actually also do it for their cats and dogs. I know of people who have done it. But if you are not able to do something that elaborate, you can do something very small, like invite some close people over and say that, this is in memory of Duchess, take my cat's name. In memory of Duchess, we are going to have this get together and we're just going to share some memories and remember her. And that is also another very beautiful way of kind of giving into the moment. So you're still grieving, but there is a shift if you can realize that, the energy field has shifted. Yes, Indrani, my next question is that how might the energy healing address feeling of guilt or regret that sometimes arise after the passing of an animal companion? Yes, so guilt and regret, these are the two most common feelings that come up. The last days, there are so many decisions that you have to make. Doubting, am I doing this right? Should I have done something different? So guilt is there. Regret is always there. So just as energy healing can help you with grief, it can also help with guilt, regret, tapping. So going back to tapping. So when we tap, we can actually release the guilt and the regret which we have been holding on to. And then we can move on from guilt and regret to something more positive, more affirming. So energy healing can definitely help process all of these secondary emotions that are there: guilt, regret, frustration. Did I do it right? I don't know if it was a time. All of that comes. And yes, energy healing definitely helps. Thank you, Indrani जी. मैं देख रहा हूँ बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं. They are appreciating your work and the efforts which you are doing for the animals. And then now I want to ask the last question of the show. That is, can you provide examples of rituals of the ceremonies that are integrated energy healing principles to honor and to say goodbye to an animal companion? So
Ceremony, I will actually say the most practical and the most effective thing I've seen so far is EFT tapping. So I do EFT tapping for humans with respect to any situation that they have around their cats and dogs. So grief comes very often. So people come and say that, people have come with things, situations like, this cat, like I told you about the two dogs, right? So going back to that example, one of them passed away and then the second one was grieving. So we tapped on everything that was going on. We tapped on grief, we spoke about the guilt, the regret. Did I do the right thing? Could I have done something different? Maybe I should have gone to a different doctor. So EFT tapping is one of the most powerful tools that is available. So I would come to ceremonies as well, but I would say, if you come to me and tell me that I am dealing with the loss and grief of an animal companion, I will start with EFT. In terms of ceremonies, I spoke about this, that in whatever tradition you follow, there are some things that are done for humans, some do it for animals as well. So that is a line to approach. I spoke about this, gathering people together. So we call it the goodbye ceremony. So we ask, it's like a small little gathering of people who have known maybe that cat or dog. You ask everyone to come together. I normally do a little fire ceremony as well. So we build a little fire and we do a little prayer together, and we just kind of be in that moment. And just being in that moment will bring that shift. So I will say यानी हम ceremony, I will say fire ceremony, and the most simple thing, the most simplest ceremony that you can do is light a candle. For the next 21 days, if you have lost an animal companion, just in that altar that you have created with your photograph, just light a candle in front of the photograph. It's as simple as that. Just that much will also help. यानी हमारी तरह ही बिल्कुल एनिमल्स भी व्यवहार कर रहे होते हैं, फीलिंग्स कर रहे होते हैं। यहाँ पे इंद्राणी जी ने बड़ी महत्वपूर्ण सी बात कही कि वही सारी सेरेमनीज की जो हम बात कर रहे हैं, उसमें सिर्फ सबसे बड़ी जो बात हो रही है वही होती है कि हम जिस तरह से अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, जाहिर कर रहे होते हैं, उसी तरह से हम एनिमल्स के साथ में भी ये चीज़ें कर सकते हैं। और एक लास्ट में जो बात कही कि हम ये कह सकते हैं पिक्चर रखिए, उसके साथ में कैंडल अगर हम लोग एनलाइटन करके रखते हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं 21 डेज की जैसे उन्होंने बात की इंद्राणी जी ने, तो अगर वो हम करते हैं तो उससे भी उनके लिए एक रिचुअल कह लीजिए, सेरेमनी कह लीजिए, बड़ी बात उन्हें उस चीज़ से डिस्कनेक्ट होने के लिए एक वक्त, एक स्पेस देते हैं। जैसे कि हम लोगों को अपना को कंपेनियन को अपना चला जाता है तो उसके लिए एक वक्त हम अपने आप को देते हैं, तो वैसा ही वक्त हमें एनिमल्स के लिए भी देना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो उससे वो कहीं ना कहीं अपने आप को स्टेबल कर पाते हैं, अदरवाइज तो वो अपने आप को बड़ा सा शिक्षा फील करते हैं। तो उस चीज़ को जो हमें साथ दे रहे हैं, बड़े महत्व के साथ में रह रहे हैं, तो उनके साथ में चीज़ों को किया जाना ज़रूरी बेहद हो जाता है। इंद्राणी जी, बस एक लास्ट क्वेश्चन के तौर पर और लेना चाहूँ, हमारे साथ में शिवम मल्होत्रा जी जुड़े हुए हैं और ये आपसे क्वेश्चन लेना चाह रहे हैं कि हाउ द एनिमल्स अफेक्ट द हाउस एनवायरनमेंट। So from my personal experience and the experience of the people I have met, the animals always bring joy and laughter into the house. So even if you have a cat or dog who maybe has a behavioral challenge, even then the love that is there is there. So that sense of love and joy will affect your environment as well. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल प्रेम से प्रेम पड़ता है और चीज़ों के अंदर लव कंपेंशन देखो, वो कहीं ना कहीं आप अपने आप को बेहतर महसूस करते हो। साथ जैसा अभी मैं देख रहा हूँ कि आपके साथ में कैट है जो बार बार आपके इर्द गिर्द आ रही, तो वो जी बिल्कुल बच्चे के वाले तो लेकिन बाकी इंद्राणी जी, आपसे जितनी बार बात करता हूँ बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन समय की अपनी सीमाएं होती है, बस उन्हीं सीमाओं का ध्यान रखते हुए आज मुझे पुनः इस कार्यक्रम के लिए आगे लेनी पड़ेगी। आप इस कार्यक्रम के लिए आए और समय दिया और बहुत महत्वपूर्ण सी बातें की, और सबसे बड़ी बात हमें आपने ये भी समझाई कि कहीं ना कहीं हम लोग एनिमल्स को हमसे कमतर आंकते हैं। हमें ऐसा लगता है कि वो एनिमल है, वो हमारे जितने अपग्रेडेड नहीं है, हम बहुत हाईली वो डेवलप्ड मानते हैं ब्रेन वाइज, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भावनाएं सबके लिए समान होती हैं, वो दुख वो दर्द जो हम महसूस करते हैं तो वो भी महसूस कर रहे होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारी ज़िंदगी जीने का तरीका, हमारी भाषा, हमारा एक्सप्रेस करने का जो तरीका है वो उनसे अलग है, और वो मनुष्य मनुष्य का भी अलग हो सकता है, ह्यूमन्स का भी अलग हो सकता है। तो एनिमल्स और ह्यूमन्स के अंदर तो अलग होना ही होना है। तो उस चीज़ के अंदर हम देख सकते हैं, एनिमल्स, आप कैट की बात करें, डॉग्स की बात करें, उनके अंदर भी कहीं के डिफरेंसेस नज़र आते हैं। तो हर एक दूसरी जो स्पीशीज होती है उनके अंदर वो डिफरेंसेस नज़र आते हैं। तो हमें उन सारे डिफरेंसेस को अवॉइड करते हुए ये बात समझनी होगी कि सबके अंदर कंपैशन की बात करें, प्यार की बात करें, ग्रीफ की बात करें, लव की बात करें, वो एक जैसी होती है। सब
समझते हैं। आप एक किसी जानवर से प्यार करते हैं तो वो आपके साथ में जुड़ जाता है और आपके साथ पूरी वफादारी निभाता है और रिटर्न में कुछ नहीं चाहता, क्योंकि शायद वो हमारे जितना डेवलप नहीं होता, उसे नहीं लगता कि उसे मनी चाहिए इसके बारे में। लेकिन चलिए इंद्राणी जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े और बहुत महत्वपूर्ण सी बातें हमारे साथ में रखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करूंगा पुनः इस मंच के ऊपर आपके साथ में जुड़ेंगे और बहुत सारी एनिमल्स को लेके जो मिथ्स हैं हमारे दिमाग के अंदर उनको हटाने की कोशिश करेंगे। जो ट्रुथ है, जो आज आपने बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण सी बातें की कि हमें एनिमल्स को भी उसी तरह से ट्रीट करना चाहिए जैसे कि हम लोग ह्यूमंस को ट्रीट करते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं बॉन्डिंग भी अच्छी होगी और उनको अगर कोई समस्या हो रही है तो वो हमें सपोर्ट करने के अंदर भी मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, आप इस कार्यक्रम से जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।